चलो विल स्टार्ट इन 1 मिनट। चश्मा भी लगा लेंगे। हेलो हेलो, इज द वॉइस क्लियर? हेलो, इज द वॉइस क्लियर? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वॉइस क्लियर है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वॉइस क्लियर है? से वॉइस क्लियर है? से वॉइस क्लियर है? मैं दिख रहा हूं? लो आ रहा है? ऑडिबल? अरे यार, लो कैसे आता है? ऑडिबल? अरे यार, लो कैसे आता है? अब देखो। हेलो हेलो, सही आ रहा है ना? ठीक हो गया। ठीक है, सही आ रहा है ना? स्टार्ट करें? शैल वी स्टार्ट? बोलो गोलू, बोलो गोलू। चलो, कम हुआ क्या? वॉइस कम हुआ या ठीक हुआ? वॉइस तो सही दिख रहा। आप अपने डिवाइस का वॉल्यूम बढ़ाओ। क्लियर? स्टिल लो वॉइस? अरे यार, क्या प्रॉब्लम है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? Here the volume is 100%. डिवाइस का वॉल्यूम फुल। वॉइस तो ठीक है सर। कैन यू मैनेज? कैन यू मैनेज? नो बोल रहे तो बंद कर देंगे। नाउ गुड ना? ओके। यस सर। शैल वी स्टार्ट? बोलो सर जी। प्रोडक्शन एंड फीलिंग लिटिल बिट टफ। देखो, आई एम टेकिंग अ सेशन ऑन टॉम। टॉम मैकेनिक्स का सेशन ले रहा हूं। यस, आई एम टेकिंग ऑन टॉम मैकेनिक्स। प्रोडक्शन का भी थोड़ा ले लेता हूं सर। विल इट बी ओके? मैं बिना घड़ी से काम नहीं चलेगा। ये खेलिए। चलिए शुरू करते हैं। How is your preparation going on? So if you want to give the answer, you write the question number and give. Last time, how many questions did we solve, sir? I think this question was done 22nd. No one remembers. I think we solved 22nd. Yes, continue करेंगे sir. ले लो। हाँ, find the correct match. और एक बात है sir, I have found in ISRO there are some questions wherein, I repeat, numericals are involved, मतलब calculation is involved. Okay sir? अब सिंसियरली मेहनत करेंगे, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, वी विल नॉट वेस्ट एनी टाइम। आप भी वेस्ट मत करना सर। मैक्सिमम यू ट्राई टू सॉल्व विदाउट कैलकुलेटर।
तो एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं, देयर आर 2 to 3 क्वेश्चंस व्हिच इन्वॉल्व कैलकुलेशन. ओके, रेडी, चलो. नाउ ही इज आस्किंग मैच द फॉलोइंग. मोर सर्कल का इधर देखो सर, देखिए. नाउ लुक एट दिस वन, दिस वन. तो इन दिस केस सिग्मा थोड़ा छोटा कर देंगे सर. हाँ, ये वाला ले लेंगे. इफ यू सी दिस, आराम से, टेंशन नहीं लेने का, पूरा रिवीजन भी हो जाएगा सर. दिस इज पी. तो देखो 10 है सर. कैन आई राइट दिस एज सिग्मा एक्स सर? यस सर. तो सिग्मा वाई क्या है सर? सिग्मा एक्स इज 10 एंड सिग्मा वाई, there is no stress on this plane. इस पे कोई it is not stressed, so therefore it is 0. And what is tau xy sir? यहाँ पे on this plane there is no shear stress, that is equal to 0. Okay, what is the center of Mohr circle? Center of Mohr circle is sigma x plus sigma y by 2. 10 plus 0 is 10 by 2 is 5 comma 0. And what is the radius of Mohr circle? It is sigma x minus sigma y. मतलब 10 minus 0 is 10 by 2, it is 5 square, plus tau xy is 0 square. So radius is 5. Very good, sir. So if you write the center is, where is this is the origin, the center is 5, the center is 5 comma 0 here, this is the center, and the radius is also 5, this is 5, this is 5. So therefore this is the Mohr circle, sir. So this is matching to, kaha gaya re wo? I think P is matching to 3. Am I right, sir? P is matching to 3. Similarly, एग्जैक्टली आप इधर देखो सर मेरे प्यारे बच्चों, एग्जैक्टली ये देखो, ये टेंजाइल है, ये कंप्रेसिव है, तो एग्जैक्टली इसका रिवर्स हो जाएगा. ओके, नो प्रॉब्लम. अरे आ रहा है सर कुछ? एक सेकंड प्लीज. हाँ कृति, ताप रहते मग घालूंगे बेटा, मी सध्या क्लासमध्ये आहे, ताप रहते मग घालूंगे, कोई काय प्रॉब्लेम नाही. नाही नाही नाही, नो प्रॉब्लेम, ताप रहते मग घालूंगे बेटा. ओके, ठीक ठीक, बाय. यू आर फाइन ना? चलो, सॉरी, माय डॉटर इज नॉट वेल, तो थोड़ा टफ टाइम चल रहा है. कोई बात नहीं सर. अरे यार ये, चलो देखो, एंड ये देखो, इट्स कंप्लीट. लेट्स टेक दिस, ये वाला देखो सर, लेट अस टेक दिस. देखो दिस, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट. ओके, एंड दिस इज 10. What is sigma x, sir? Sigma x is 0. What is sigma y, sir? 0. There is no normal stress on this plane and this plane. So tau xy is 10. So what is the radius of Mohr circle, sir? Sorry, center क्या होगा sir? Sigma x plus sigma y, 0 plus 0 by 2, so and 0. So center is at the origin. देखो, very good. किसका सेंटर ऑरिजिन पे है सर? इधर देखो, विच वन. देखो इसका सेंटर, ये सर्कल का सेंटर ऑरिजिन पे है, सो नो नीड टू डू. सो देयरफॉर Q इज मैचिंग टू 4. तो इधर आइए सर, P is 3, Q is 4, P is 3, Q is 4, P is, ये गया, ये गया, ये गया, खत्म सर. इन एग्जामिनेशन यू शुड नॉट वेस्ट टाइम. इज इट ओके सर? P3, यस एग्जैक्टली, इसमें कोई डाउट नहीं, ये क्वेश्चन हो गया सर. एनी प्रॉब्लम सर? डू यू वांट मी टू डू अदर पार्ट्स आल्सो? अरे यार, ये भी कोई करने की बात है सर? इसका कैसा होगा सर? डेफिनेटली इट विल बी लाइक दिस. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. ठीक है, चलो. ये पढ़ो, ये पढ़ो सर. डू दिस क्वेश्चन. कम ऑन, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम सर, क्योंकि ना मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस करना है सर आज. ओके, ए होमोजेनियस शाफ्ट PQR. देखो, ए होमोजेनियस शाफ्ट PQR, एक बार देख लेना. दिस इज P, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, एंड इट इज मेड ऑफ सेम मटेरियल. बिकॉज यहाँ पे G1 G2 नहीं दिया है. ओके, कोई बात नहीं. देखो एक बार, with fixed supports at both the ends, is subjected to a torsional moment T at the point Q. So it is subjected to torsion. इधर देखो सर, तो this is pointing rightward, so it will be, the torque will be something like this. देखो ऐसा ऐसा, यहाँ पे torque is it is pointing toward this, so therefore it will be like this. ऐसा है, this is the torque. देखो right hand ले लो, so this is the torque. So here the torque is T, this length is L1, this length is L2, this has a polar moment of inertia of J1, and this has J2, and both ends are fixed. Okay, any other data given, sir? The polar moment of inertia of the both sections are given. The torsional moments at P and R are TP and TR. Okay, and TP by TS is the ratio given. ठीक है sir, and
4 दिया है, J1 J2 दिया है, what is the ratio of lengths L1 by L2? ये पूछा सर, he is asking L1 by L2. ध्यान से सुनो सर, ये ऐसे क्वेश्चंस 99% आएंगे सर एग्जाम में. Now I have a question sir. मेरे प्यारे बच्चों, डेफिनेटली व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्शन, ट्विस्टिंग के कारण विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स्ड एंड यहां पे कुछ ट्विस्ट हो जाएगा, ठीक है. If you see the overall twist of this with respect to this is fixed end, this is fixed end. So अगर total twist की बात करेंगे तो कितना हो? It's something like this. एक बार मैं आपको आइडिया दिला देता हूं, इधर देखना सर. I'll give you some idea. Let us say it is fixed. now बताइए, this portion is subjected to tension, this portion, and this is subjected to compression. So this end is fixed, this end is fixed. So what is the net elongation? Zero, because ye bhi fixed hai, ye bhi fixed hai. So therefore whatever the expansion is taking place, the compression should be same, thereby the total will be zero. Now whatever this portion with respect to this, ye jitna twist ho raha hai, with respect to this ये भी उतना ही twist होना चाहिए, so that the total should be zero. So can I say twist in this is equal to twist in this? Yes sir. Let us assume that इसमें जो टॉर्क है, इसमें जो है इसको T1 ले लेंगे, इसमें जो टॉर्क है इसको T2 ले लेंगे. But what he says is इसको वो TP बोल रहा है सर, he is saying this as TP, and इसको बोल रहा है वो TR बोला है ना. Did he say TR? Yes, TS बोल रहा है शायद. I think let him say it is TP by TR. TR sir. ओके, दिस इज T2 को TR बोल रहा है, बोलने दो, ठीक है सर. नाउ कैन आई से व्हाट इज द, यू नो, T by J is equal to G theta by L, और theta is equal to TL by GJ. So इसमें कैलकुलेट करेंगे तो whatever the twist is there in the first portion should be equal to the twist in second portion. ऐसा क्यों सर? Because both the ends are fixed. So therefore theta1 क्या होगा? T1 L1 by GJ. So I am not writing G1 because G is a material property. So both are made of same material. So G1, G2 will be same. ठीक है? Should be equal to T2 L2 by GJ. So okay, J2. Now GG is gone. He is asking, what is he asking in the question, sir? L1 by L2. So therefore L1 by L2 is equal to, what is L1 by L2? So it will be T2 by T1 into J1 by J2. एक बार देख लेना. L1 by L2 is T2 by T1 is J1 by J2. Already T2 by T2. Be careful, sir. Here TP by TR is given. TP by TR is given. TP by TR is given. Here TP is T1. TR is T2. TP by TR. This is TP by TR. How much is that given, sir? कितना दिया, sir? TP by TR. This is 4. And J1 by J2 is also given. What is J1 by J2, sir? It is given as 2. तो यहाँ पे put करना sir. तो L1 by L2 is equal to, what is T2? Ultra. T2 by T1. T1 by T2 is 4. T2 by T1 is 1 by 4 into J1 by J2 is 2. तो ये कट गया 1 by 2. So L1 by L2 is equal to 1 by 2, which is nothing but 0.5. Is it correct, sir? Very good, sir. It is 0.5. Let's not waste time, sir. मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस है. सो ये स्पीड ठीक है सर सबके लिए? इज दिस स्पीड ओके? क्या ये स्पीड ठीक है सर? ठीक है, वेरी गुड. चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, अच्छा क्वेश्चन है. थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन इज इन्वॉल्व, तो यू मे बी वंडरिंग, सर इन इसरो कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड. तो करना ही पड़ेगा सर आपको. दैट इज नॉट माय हेडेक सर, दैट्स नॉट माय हेडेक. A homogeneous prismatic linearly elastic steel bar is fixed at both the ends and has a slenderness ratio of L by R is equal to 105. What is the slenderness ratio, sir? The slenderness ratio is L by R and that is given as 105, sir. ठीक है. Now, R is the, देखो, what is R, sir? It is the radius of gyration. You know the meaning of radius of gyration, which I taught very clearly in mechanics. What is radius of gyration? It is nothing but, it is if a point mass is rotating about that, the resistance moment of inertia show करता है सर. ठीक है सर, वो हो गया.
And what is given? The coefficient of thermal expansion alpha is given as 12 into 10 power minus 6, of course, per degree centigrade. Any other data given? Consider the effective length as 0.5. You know very well. देखो एक बार. When both the ends are fixed, what is the effective length, sir? 2L, 0.5, L by 2, L by 2. Because देखो एक बार. तो ये जो लेंथ है ना, इट इज L by 2. All this I had explained very clearly in class. तो अब बताओ क्या बोल रहा है सर? Consider the effective length of this and neglect the self weight. The differential increase in temperature which it starts buckling. एक ऐसा टेम्परेचर पूछा wherein it starts buckling. देखो एक बार. You know what is the buckling load? Pi square EI by LE square, where LE is the effective length. In this case, what is the effective length, sir? Because when both the ends are fixed, ध्यान से सुनिएगा, when both the ends are fixed, it is 0.5 L, 0.5 L, or this can also be written as 0.5 is half, half होगा, half का square 4 होगा, 4 will sit at the top. So 4 pi square EI by L square. This is the buckling load. And one more thing, what he is doing, you know, my dear students, this is the member which is fixed at both the ends. Now he is heating this. So he is asking what should be the difference of temperature so that it starts buckling. When you are heating, the material will try to expand, but these supports, they are not allowing it to expand. They offer compressive force. Correct, sir? And you know very well, when complete expansion is prevented, what is the equation of stress, sir? मैं बताया, आपको बताया था. The equation of stress is alpha delta TE. This is the equation of stress. So what will be the load, sir? Yes, stress है, sir. And if you want, I can derive now, but जरूरी नहीं है. If complete expansion is prevented, the thermal stress is given by alpha delta TE. Do you want me to derive, sir? If you want, I can derive. सर साउंड इंक्रीज पता नहीं सर, मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. आई डोंट नो सर, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो सर. तो साउंड पता नहीं सर, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ सर. यहाँ पे तो मुझे तो आता भी नहीं सर. एक बार ऑडियो देखता हूँ सर. अभी एडजस्ट हो चलेगा सर? पता नहीं है. इट्स ओके ना? इट्स ओके ना? ओके, वॉइस आ रहा है ना? हाँ, मैं भी यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा दिए देता था सर. ओके, सो एवरीथिंग इज फाइन ना? ठीक है, चलो. नाउ इफ यू वांट आई कैन डिराइव दिस. जरूरी नहीं है. व्हेनेवर कंप्लीट एक्सपेंशन इज प्रिवेंटेड, द थर्मल स्ट्रेस इज अल्फा डेल्टा टी ई. दिस इज द स्ट्रेस. मुझे लोड चाहिए. इफ यू वांट द लोड, मल्टीप्लाई दिस स्ट्रेस विद एरिया. तो व्हाट इज दैट? अल्फा डेल्टा टी ई इनटू एरिया, सर. बट व्हाट इज दिस सेइंग? दिस थोड़ा ये कम कर देता हूं सर. देखो, नाउ लुक एट. So what is he saying? This is the buckling load. This is the buckling load. So this is the load. Already you know the buckling load. So this is the load due to the thermal stress. So equate this. किस लोड पे बकल हो रहा बोल रहा है? Equate these two. क्या होगा सर? 4 pi square EI by L square is equal to alpha delta T EA. Excellent, sir. Everyone knows the moment of inertia is given by I is equal to AR square, where R is radius of gyration. Simple mechanics say, at least you know this, sir. I is equal to AR square. Is it okay? At least ये जानते ना. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ सर? Pi square EI. I is equal to AR square लिख रहा हूँ सर. ध्यान से सुनो.
ई ए इज गॉन, और क्या है सर, 4 पाई स्क्वायर, देखो ये आर को नीचे ले लेना, एल बाई आर होल स्क्वायर, बिकॉज इट इज एल स्क्वायर आर स्क्वायर, सो दैट शुड बी इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, तो अल्फा को नीचे ले लेना सर, दैट शुड बी इक्वल टू योर डेल्टा टी, सो डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई alpha, and already you know this is the slenderness ratio, so this is slenderness ratio का whole square. तो you may be wondering sir इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में देगा क्या? अब देखो एग्जाम में he may not be giving you numericals, मतलब वैल्यूज नहीं देगा, सिर्फ अगर इस फॉर्मूले फॉर्म में दिए तो क्या करेंगे सर, आ सकता है सर, इज इट ओके? बोलिए सर जी, सो पुट करो सर, नाउ यू पुट करो, ही इज आस्किंग द राइज ऑफ टेम्परेचर, व्हाट विल बी दैट राइज ऑफ टेम्परेचर, 4 पाई स्क्वायर, ठीक है सर, बाई अल्फा इज 12 into 10 power minus 6 and the slenderness ratio is given as 105, 105, थोड़ा कैलकुलेटर यूज करो, कोई दिक्कत नहीं आज के लिए, इसके लिए देखो कितना आ रहा है सर, एक्चुअली यू शुड नॉट यूज, तो मे बी द क्वेश्चन मे बी ओनली अप टू दिस, ये एडिशनल है, तो एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन हो सकता है सर, एनीवन? वेरी सैड सर, अब मैं ही कैलकुलेटर ला रहा हूं क्या, वेरी सैड, वेरी सैड, ये बच्चों को कुछ आता ही नहीं। How much is this? 290, only one has given, only one has given, so this will be 298 is the right answer. वेरी सैड सर, बहुत बुरा लगता है सर, बहुत बुरा लगता है सर, सो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दीज वैल्यूज आर देयर, बट एटलीस्ट टू दिस, यस ही कैन आस्क, एटलीस्ट अप टू दिस ही कैन आस्क, इज इट ओके, इज इट ओके, राइट, लेट्स टू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करो, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, प्लीज आंसर दिस, ये वाला, प्लीज आंसर, प्लीज आंसर दिस, एनीवन, 26D. he is asking plane strain के लिए necessary condition. मेरे प्यारे बच्चों, प्लेन स्ट्रेन के लिए इन एक्स वाई प्लेन, व्हाट इज प्लेन स्ट्रेन? प्लेन स्ट्रेन कंडीशन इज अ कंडीशन इन विच द स्ट्रेन इन वन ऑफ द प्रिंसिपल डायमेंशंस इज जीरो। प्लेन स्ट्रेन का कंडीशन वो कंडीशन होता है जिसमें थर्ड डायमेंशन में स्ट्रेन्स जीरो होते हैं, दैट इज द नेसेसरी कंडीशन। तो व्हाट इज प्लेन स्ट्रेस कंडीशन? Plane stress condition is that condition where the stress in one of the dimensions, the third dimension is zero. यहाँ पे xy plane बोला मतलब z डायरेक्शन में क्या जीरो होना चाहिए? देखो ये प्लेन स्ट्रेन है तो स्ट्रेन इन z डायरेक्शन मस्ट बी जीरो। द स्ट्रेन इन दैट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर प्लेन स्ट्रेन। अगर यही क्वेश्चन प्लेन स्ट्रेस बोलता है तो यहाँ पे स्ट्रेस इन थर्ड डायरेक्शन मस्ट बी जीरो होना चाहिए। तो ध्यान से सुनो सर, इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखना सर, देखो एक बार, can I write epsilon z as sigma z by E minus nu by E into sigma x plus sigma y? Can we write, sir? Can we write the strain in the z direction? बोलो सर, कुछ तो बोलो, ये लिख सकते हैं। अब बताओ सर, प्लेन स्ट्रेन के लिए, फॉर प्लेन स्ट्रेन एप्सिलॉन z इज जीरो, प्लेन स्ट्रेन के लिए एप्सिलॉन z इज जीरो, ठीक है सर। अब बताओ सर, एप्सिलॉन z जब जीरो है तो ये उधर जाएगा, जीरो जाएगा। सिग्मा z इज इक्वल टू न्यू इनटू सिग्मा x प्लस सिग्मा y। क्या मैं बोल सकता हूं कि सिग्मा z इज ऑलवेज जीरो? नहीं, नो, इट मे और मे नॉट बी जीरो, बट प्लेन स्ट्रेन के लिए, प्लेन स्ट्रेन के लिए एप्सिलॉन z शुड बी जीरो। प्लेन स्ट्रेस के लिए, इधर देखना सर, प्लेन स्ट्रेस के लिए
प्लेन स्ट्रेस के लिए, प्लेन स्ट्रेस के लिए वन ऑफ द स्ट्रेसेस मस्ट बी जीरो, मतलब थर्ड डायमेंशन में स्ट्रेसेस सारे जीरो। इधर देखो सर, एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू सिग्मा जेड बाई ई माइनस न्यू बाई ई इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। इधर देखना सर, अगर प्लेन स्ट्रेस की बात कर रहे हैं एप्सिलॉन जेड इज जीरो, जब एप्सिलॉन जेड जीरो है, एप्सिलॉन जेड सिग्मा जेड जीरो है, एप्सिलॉन जेड इज माइनस सिग्मा बाई ई इंटू सिग्मा प्लस सिग्मा बाई। ध्यान से सुनिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा। क्या, देखो, अगर प्लेन स्ट्रेस है तो सिग्मा जेड शुड बी जीरो, तो एप्सिलॉन जेड जीरो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। बोलो सर, इज इट क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लेन स्ट्रेस प्लेन स्ट्रेन आर टोटली डिफरेंट कंडीशंस। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है तो what is the condition for the simultaneous occurrence of plane stress and plane strain? अगर plane stress और plane strain दोनों एक ही साथ होना है तो सिग्मा जेड एप्सिलॉन जेड जीरो होना चाहिए। अब बताओ सर, नाउ यू टेल मी व्हेन इज इट पॉसिबल? When sigma z is zero, when can epsilon z be zero? Either Poisson's ratio is zero or the summation of sigma x and sigma y is zero. That is the condition. Is it okay, sir? अरे यार विजय, आई एम स्टार्टिंग इंडस्ट्रियल कोर्स इन फ्रॉम 2nd of October. Yes, both are 2nd of October. Both are different, sir. Both are independent. Exactly. ये क्वेश्चन अच्छा था सर, तो व्हाट इज आंसर? इंडस्ट्रियल आई एम स्टार्टिंग ऑन October 2nd, सर। ओके मिस्टर विजय, ठीक है। देखो, देखो, तो व्हाट इज द आंसर टू दिस? फॉर प्लेन स्ट्रेन पूछा है सर, इट इज दिस। इफ द सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर प्लेन स्ट्रेस, देन ए विल बी द आंसर। ठीक है सर जी, चलो ये ले लो। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, एवरी ईयर यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन सर। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर टू डिफाइन आइसोट्रोपिक? आइसोट्रोपिक के लिए कितने चाहिए सर? आंसर दो रे, आंसर दो रे। छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप इतना टाइम ले रहे हैं। राइट, ये करो। हाँ, आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम यू पीपल। आंसर दीजिए सर, प्लीज आंसर। कम ऑन कम ऑन, 28th क्वेश्चन। देखो, एडमिट कार्ड इसरो आरएसी का आया है, बट नॉट ऑफ मैकेनिकल। यू मे रिसीव इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, ऐसा लग रहा है। डोंट बी अंडर द इंप्रेशन दैट इट विल बी पोस्टपोन्ड, नहीं ऐसा नहीं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है सर, इधर देखो, सिंपल क्वेश्चन सर। द प्रॉब्लम विथ सच क्वेश्चंस इज जनरली स्टूडेंट्स by looking at the figure they are worried. देखो, consider a rectangular plate, ठीक है, this is a rectangular plate with in plane loading. Okay, the state of stress on an arm in an at an arbitrary angle, some angle theta, कुछ एंगल दिया, देखो इस प्लेट पे कुछ आर्बिट्ररी एंगल पे लोडिंग बता दिया सर, दिस लोडिंग इज शोन। ओके, इफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस थीटा, थीटा कितना दिया सर? थीटा इज 45, यस ये 45 है। सपोज थीटा इज 45, तो क्या दिया सर, एक बार देखना, द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर गिवन, मतलब दिस इज प्रिंसिपल स्ट्रेस, हाउ मच इज सिग्मा इज गिवन 8, and this is principal stress, that is sigma y. So on principal planes, अब ये principal plane हो गया सर, ये principal plane हो गया, तो on these planes when the stress is normal stress is 8, is principal, तो clearly बोला है principal stresses are given, principal stresses, this principal stress, this is also principal stress। देखो ये principal stress है, ये principal stress है। On principal plane what is the shear stress? What is tau xy? On shear principal planes the shear stress is 0। he is asking what is tau xy? 0। such a simple question was asked, लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे सर, मत होना बेटा। ओके सर, चलो ये करो, फटाफट कंप्लीट कर। कम ऑन कम ऑन। A uniform cantilever beam of length L and flexural, देखो there are three types of rigidities. Flexural rigidity, if it is more, it gives more resistance for bending. Torsional rigidity more है, तो it shows more resistance for twisting. If the axial rigidity is more,
then it shows more resistance for axial deformation. So देखो एक बार, a beam of length L, देखो this is 2L by 3, this is L by 3, the total length is L, and it is loaded somewhere at a distance of 2L by 3 from the fixed end. And what is the magnitude of the deflection at the free end? At the free end कैसे करेंगे सर? बहुत सिंपल है सर. देखो सर, that's why certain things you should know. The load is F. This is 2L by 3. This is L by 3. Now बताइए सर, if you see the diagram, आराम से, ये क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है सर. ओके, मुझे बताइए, इज देयर एनी लोड हियर? ना. सो देयरफॉर यहां से वो स्ट्रेट लाइन बनेगा सर. So he is asking deflection here. So can I say deflection here is this deflection delta 1 plus this deflection delta 2? Yes. Let the slope here at this point यहाँ पे let the slope be theta. I know very well, for a cantilever beam with a point load here, what is the deflection sir? PL cube by 3EI. अगर लेंथ L है, ये L है, तो it will be PL cube by 3EI. लेकिन the length is 2L by 3. तो can you tell me what is deflection at one? ये वाला देखो, ये वाला, this one. So it is something like cantilever with a point load at the free end. अगर length 2L है, तो क्या होगा? F L cube, what is the length? 2L by 3 whole cube by 3EI. Very good, sir. Plus there is a deflection, ये वाला delta 2. What will be delta 2, sir? This length is L by 3. Slope tan theta is equal to theta. That is tan theta slope is equal to delta 2 by tan theta is opposite by adjacent. That is L by 3. So अगर आपको delta 2 चाहिए, it will be L by 3 into slope. Can you tell me what is the slope at the free end? अगर ये इसको free end मान रहे हैं, तो slope क्या होगा? PL square by 2EI. तो therefore L by 3 into ये थीटा, स्लोप क्या होगा? P का मतलब F, L स्क्वायर, देखो L स्क्वायर इज 2L by 3 का होल स्क्वायर बाई 2EI, PL स्क्वायर बाई 2EI. तो आंसर कितना आएगा सर? तो दिस विल बी 4F L cube by 3, that is 9, 9 to 18 EI. Am I right, sir? Correct. So 2 2s, 2 9s. This will be 2FL cube by 9EI. तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से, so this will be 8FL cube by 3 3 9 3 27 3 81 EI. मैं कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, गलत किया सर कुछ? Did we commit any mistake sir कैलकुलेशन में? सही है शायद, आई थिंक करेक्ट ना? कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक किया सर? 8FL cube by 3 9 27 81. करेक्ट. ये वाला है, ये L by 3 into PL square is correct? 81 to 9 to 18. 18 FL cube by 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 EI. तो therefore it will be 26 FL cube by 81 EI. गलत किया ना? Somewhere we have committed mistake ना? ऑप्शन है नहीं, एक बार देखता हूँ सर. Somewhere we have committed. PL square by 2EI. P is F, L square is by 2EI. 2 to 4. 2 to 4. और ये 9 3 27 2 3 3 9 3 27. यहाँ पे गलत किए. I think here we have committed mistake. देखो 3 3 9 ना, करेक्ट है ना? 3 3 9 3 27. Is it 54? कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया सर शायद. एक बार चेक करते हैं सर. Now is it correct? Is it correct? Yes. अब ये हो जाएगा आपका
Now I think it is correct. 4 by 54. 2 1 2 2 227. So ये होगा 2 by 27. 2 by अरे यार 2 by 27. This will be 2 by 27. Am I right sir? बिल्कुल. तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो 3 2, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 81 आएगा. 3 2 6 मतलब 6 plus 8 14. So this will be 14 FL cube by 81 EI. Is that option available? I think B is correct ना? Is B correct? Yes sir. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्वेश्चन ऑन दिस, आइदर प्रॉपर्ड कैंटिलीवर या फिर ऐसा. आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन आंसर ऑन दिस सर. क्या पता यहाँ पे एक सपोर्ट रखेगा, रोलर सपोर्ट रखेगा. ही मे बी आस्किंग रिएक्शन हियर एट द सपोर्ट. ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते सर. इज दिस क्वेश्चन क्लियर सर? हाँ, लेट्स प्रोसीड. ये करो, आंसर दीजिए सर. प्लीज आंसर, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन. देखो क्या बोला है सर. So the stress strain diagram is obtained by uniaxial loading as shown in the figure. The specimen exhibits cup cone. अच्छा, मतलब cup cone का मतलब necking start हो रहा है, ductile material with the gauge length. Which point on the curve shows the beginning of necking? Beginning of necking, sir. Anyone? देखो देखो, यहां से नेकिंग शुरू होगा. when necking starts, the resistance of the material decreases to the external load, thereby the stress starts decreasing. क्योंकि localization हो जाएगा वहां पे. so at some local point the necking will begin. so therefore, so S is the point where the necking begins. कहां गया रे वो? S. excellent sir. option D is correct ना? very good sir. बहुत अच्छे स्टूडेंट्स है सर आप. चलो नेक्स्ट वाला ये करो. मस्त क्वेश्चन है. वन सेकंड. हाँ प्रशांत, होय रे, खबर काय झालं? सगळं ठीक आहे? हम्म. म्हणजे ओके ओके ओके, नथिंग टू वरी. ठीक आहे, मी क्लास झालं की बोलतो रे. ओके 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 ओके. चलो, एक्चुअली my brother met with an accident. हाँ, चलो ये क्वेश्चन लीजिए. Come on. अच्छा क्वेश्चन है सर ये. Come on. T1A. ओके. थोड़ा केयरफुल रहो सर, थोड़ा केयरफुल रहो सर. यू विल गेट 0 मार्क्स सर इफ यू गिव दैट ओनली. देखो एक बार सवाल देखो, मैं बताता हूं सर. व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट सर? द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज 100 mm. ठीक है. and it is subjected to a torque of 3 pi kilonewton meter. Okay. and he is asking the maximum shear. You know that for a shaft, I'm not writing all those things. T by J is equal to tau by R. यहाँ से J is pi by 32 d power 4 and tau R is equal to d by 2. यहाँ से 2 ones 2 16s, ये d cube गया. So tau will be equal to 16 t by pi d cube. This is the maximum shear stress. Okay now, this is the case of maximum shear stress. Is it correct sir? Okay, अब देखो, let us find out the value. Tau is equal to, one more thing, let us keep the diameter in mm. torque को हम न्यूटन mm में रखेंगे and diameter को mm में रखेंगे mm cube. So this will be mm square. Newton per mm square is nothing but megapascal. चलो 16 torque. What is the torque sir? What is the torque? 3 pi. देखो देखो एक सेकंड. 3 pi किलो is 10 power 3 न्यूटन. मीटर दिया. What is meter sir? 10 power 3 mm. Excellent.
बाई पाई इंटू डी क्यूब। व्हाट इज द डायमीटर सर? डायमीटर कितना दिया सर? एक सेकंड, डायमीटर कितना दिया? 100 पाई डी क्यूब। तो अब बताओ सर, टाउ का वैल्यू कितना आ रहा है सर? आई थिंक इसमें कोई टफनेस ही नहीं है सर कैलकुलेशन में। देखो एक बार, पाई पाई गया तो 16 3 48 और ये 10 पावर 6 हो गया सर यहाँ पे। दिस देखो कैलकुलेशन भी कितना स्मूथ है। दिस इज ऑल्सो 10 पावर 6, सो इट इज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इट इज मेगा पास्कल। एक्सलेंट सर, यहां तक कोई टेंशन की बात नहीं है सर। सो एवरीवन गिव दिस आंसर, ओके ठीक है। तो कैन यू रिप्रेजेंट, इफ यू टेक अ एलिमेंट and if you see the nature of the stress, it is, this is the case of torque, pure torsion sir. This is the case of pure torsion. This is 48. Is it correct, sir? Is this correct, sir? Is this correct, sir? Yes. इसका more circle draw करेंगे, sir. What is sigma x, sir? 0. What is sigma y, sir? There is no sigma x, sigma y. And what is tau xy? This tau xy is 48. Let's draw the Mohr circle. Where is the center of Mohr circle? Sigma x plus sigma y by 2. 0 plus 0 means 0, comma 0. And what is the radius of Mohr circle? Under root of sigma x minus sigma y, 0 minus 0 by 2 whole square, 0 square, plus tau xy, it is 48 square. So therefore, R will be equal to 48. Please draw the Mohr circle. So this is the center and it will be, this radius is 48 sir. Very good. अब बताओ sir, what is the maximum normal stress tensile? Maximum tensile is 48. And what is the maximum compressive? Maximum compressive is also 48. नहीं है सर आपको, प्लीज बताइए, आर वी क्लियर? सो दिस द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। दिस whenever देखो my dear students, when a brittle material, when a brittle material is subjected to torsion, कैसा फेल होगा सर? एट 45 डिग्रीज, एक चॉक पीस लीजिए आप, ध्यान से सुनो, यू टेक चॉक पीस एंड ब्रेक इट, so at 45 degrees it fails because there the tensile stress is maximum, because brittle metals are weak in tension, so therefore it breaks at, तो ये मत सोचना कि देखो क्वेश्चन कितना प्यारा सा क्वेश्चन है सर, आंसर दीजिए सर, नाउ गिव द आंसर। The maximum shear stress is, yes, correct. The maximum tensile stress is correct. The maximum compressive stress is correct. And the maximum magnitude of shear stress is same at all planes. No, at all planes is it same sir? क्या हर एक प्लेन पे 48 है सर? देखो यहाँ पे देखिए, तो इस प्लेन पे, yes, it's not 48, it's not 48 sir. This value is not 48. तो इस प्लेन पे is the shear stress 48 sir? No. इस प्लेन पे is the shear stress 48? इस प्लेन पे is it 48? No. Only इस प्लेन पे 48 है. So therefore option D is wrong. देखो हर एक प्लेन पे 48 नहीं है। मस्त क्वेश्चन था सर, ठोको ताली। यही होता है सर। तो आप बोलेंगे सर इसरो में एमएसक्यू कैसा देगा? अब मैं बताता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? देखो फर्स्ट ऑप्शन, देखो मित्रों, देखो एक बार, ऑप्शन ए, सॉरी, ऑप्शन वन, ओनली ए इज करेक्ट। ऑप्शन टू, ए बी आर ओनली, ए बी ओनली आर करेक्ट। सी, सॉरी, थ्री, ए बी एंड सी आर करेक्ट। डी, ए बी सी एंड डी आर करेक्ट। अब देखो सर, क्या क्वेश्चन है सर, बोले एक बार। अरे फ्लाइंग किस देंगे आप? मुझे 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 नहीं, स्लिम मुझे 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 मुझे। अंडरवर्ल्ड डॉन भी किस दे रहा है? देखो मतलब डॉन भी अच्छा इंसान है सर। चलो थैंक यू। चलो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम सर, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है सर, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ले लो, ये कर रहा हो, वो कर रहा हो, ये कर रो रे, ये कर रहा हो, वो कर रहा हो, ये कर रो रे। Come on, read the next question. डू यू वांट मी टू जूम इट? नहीं ना दिख रहा है ना सर आपको? सब लोगों को दिख रहा है सर? हाँ, द फिगर इज हियर। देखो
there is a strain rosette at 0 degree, at 45 degree and at 90 degree. Okay, देखो, it is given. PQR are oriented at 0, 45, 90. The strain readings are given denoted by PQR. Okay. Now, EP is 140, 150, EQ is 180 and ER is minus 90. देखो, EP कितना दे रहा है सर? It is 150. This is giving me 150 microns. What do you mean by microns, sir? देखो, micron means 10 power minus 6. Micron is 10 power minus 6. Okay. And EQ is 180. This EQ is giving 180. Correct na? Micron, of course. देखो, 180. 180 कहाँ गए रे वो? 180. And R is giving minus 90. This is giving minus 90 micron. ठीक है सर जी. देखो ये दिया है सर. The developed stress strain and he is asking shear strain gamma xy associated with the strain gauge reading is. बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर. देखो, he is asking, ये पूछा है सर. चलो कोई बात नहीं, हम करेंगे. देखो सर, very simple question. Always remember strain gauges, strain rosettes, they measure only normal strain. Only normal strain. But to know the state of the strain at any point, you should know epsilon x, you should know epsilon y, you should know gamma xy. But gamma xy is not measured by the strain rosette. तो क्या करेंगे हम? उसके लिए क्या करेंगे सर? थर्ड वाला लेके we have equation. Shall we proceed सर? इधर देखो, मुझे बताओ सर, if you want the strain on any plane, एक काम करते हैं सर, थोड़ा छोटा लिखेंगे. So if you want the strain on any plane at an angle theta, it is given by epsilon x plus epsilon y by 2 plus epsilon x minus epsilon y by 2 cos 2 theta plus gamma xy by 2 sin 2 theta. At least you know this equation ना? ये सेम इक्वेशन है सर, जहां पे सिग्मा है एप्सिलॉन लिखो, जहां पे सिग्मा है एप्सिलॉन लिखो, जहां पे सिग्मा है एप्सिलॉन लिखो, जहां पे टर्म्स है गामा बाय 2 लिखो. आई टोल्ड यू व्हाई टू राइट गामा बाय 2, व्हाई नॉट गामा. इज इट ओके सर? यस. अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो सर, दिस इज एट व्हाट एंगल सर? मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, दिस इज एट व्हाट एंगल? 0. ये 0 डिग्री पे. तो 0 डिग्री पे कौन सा वैल्यू सर? डायरेक्टली इट विल मेजर एप्सिलॉन एक्स. तो डायरेक्टली एप्सिलॉन एक्स मेजर करेगा. दोबारा बता रहा हूं सर कैसे. तो व्हाट इज द एंगल सर? इसको मैं ईपी लिखूंगा सर. ईपी क्या होगा सर? इसको टीटा 0. ईपी मींस टीटा 0. टीटा जब 0 है तो cos 0 इज 1. टीटा 0 है तो ये sin 0 उठ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा. एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2. एप्सिलॉन वाई जाएगा, 2 एप्सिलॉन एक्स बाई 2, ये डायरेक्टली एप्सिलॉन एक्स आएगा. दैट्स व्हाई दिस इज गिविंग एप्सिलॉन एक्स. सिमिलरली व्हाट इज एप्सिलॉन? देखो थीटा 90. एप्सिलॉन आर को देखेंगे सर, आर को. दिस इज एट थीटा 90 डिग्री. इधर देखो ये वाला एप्सिलॉन आर क्या होगा सर? ये क्या होगा? आर थीटा 90. तो व्हाट इज ये वाला कितना होगा सर? थीटा 90 साइन 180. साइन 180 ये तो 0 हो जाएगा सर व्हेन थीटा इज 90. तो ये cos 180 क्या होगा? -1 होगा सर, माइनस. तो ये माइनस, ये cos 180 कैसा 180? 90 डिग्री. 92 into 90 is 180. cos 180 is -1. तो माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन एक्स हो जाएगा. माइनस प्लस 2 एप्सिलॉन वाई बाई 2, ये एप्सिलॉन वाई आएगा सर. करेक्ट. नाउ व्हाट अबाउट ER? ये देखो EQ. व्हाट अबाउट एप्सिलॉन Q सर? एप्सिलॉन Q इज एट व्हाट एंगल? ये Q वाला कितने एंगल पे है? 45. Q इज एट 45. तो एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y बाई 2 plus 45. What is 45 sir? 45 into 2 is 90. Cos 90 is 0. ये गया. Plus gamma x by 2 and 45 into 2 is 90. Sin 90 is 1. ये आ गया sir. So what is epsilon q sir? Epsilon q is 180. Excellent sir. 180. Epsilon x कितना है sir? Epsilon x is epsilon p. What is epsilon p? Epsilon x. Epsilon x is epsilon p. Epsilon x is epsilon p. So epsilon p is 180. Q is, this is 180. Epsilon x कितना है सर? Epsilon x is epsilon p. Epsilon p is 150. And epsilon y, what is epsilon y sir? Epsilon y is, इधर देखो, epsilon r. R is 190. 190 plus gamma xy by 2. तो कितना आ रहा है सर ये? I think this is how much is this sir? कहीं गलत किए सर हम?
यहाँ पे बाई टू आना चाहिए सर। एप्सिलॉन एक्स प्लस 30 आ रहा है, करेक्ट। 30 आ रहा है सर, ये 30 आ रहा है, ये 30 एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई टू। ओके, ये 30 60 बाई टू इज 30, 30 180 minus 30 is 150, 150 into 2 is 300. Anyone got gamma as 300 micron? Micron means 10 power minus 6, so gamma is 300. Anyone got the answer, sir? Sir, I am doing all varieties, sir. I am doing all varieties, sir. It's very good, sir. चलो ये देखो, हमें ना कॉन्सेप्ट्स लेना है सर। We have to take concepts, that's it. Come on, come on, come on, come on. आंसर दीजिए सर। देखो सर, anyone? I want the answer. ACD. Someone gave ACD. Who is that? Who is that? Akhil Vaibhav. ACD. अच्छा, एक्सीडेंटल इंजीनियर। ओ माय गॉड, नाम तो बहुत अच्छा है सर। हम्म, सोच के आंसर दो। जस्ट थिंक एंड गिव द आंसर। जस्ट थिंक एंड गिव द आंसर। Someone said ACD, underworld on ACD. देखते हैं सर, देखो। Someone said ACD, underworld. देखो, you know the buckling load is given by, देखो एक बार, the buckling load is given by pi square EI by LE square, sir. This LE depends on what? The effective length depends on what? Boundary conditions, end conditions. What do you mean by boundary end conditions? If both are hinged, LE will be L. So definitely the buckling load depends on the end conditions. Yes or no? Which of the following? Okay. The buckling load increases with increase in flexural rigidity. What is flexural rigidity? EI is flexural rigidity. Can I say the buckling load is proportional to flexural rigidity? Yes. If the flexural rigidity is more, you need more load to buckle. So resistance will be more. So अगर flexural rigidity ज़्यादा है, तो more load is required to cause buckling. So buckling load increases with increase in flexural rigidity. It is 100% correct. Very good. The buckling load increases with increase in length of the column. देखो, if I increase, देखो, the buckling load is in fact inversely proportional to the square of the length. If the length is increasing, the buckling load will decrease. तो अगर length बढ़ रहा है तो it is easy to buckle, less load पे buckle करेंगे. So the buckling load increases with increase in length of the column. No, in fact it decreases. ये गलत statement है sir. The boundary conditions of the column affect the buckling load. Yes, this effective length will change. This numerator will remain same, but this denominator will change with the boundary conditions. Pinid के लिए अलग है, both n fixed अलग है. समझ में आ रहा है sir? So this is also the correct statement. The buckling load is not directly dependent on the density of the material. यहीं पे यहाँ पे कहीं density है sir? Is there any density here sir? No, directly there is no relation. So ये भी सही है sir. So those who have given ACD, अपने आप को थोड़ा टैप कर लो, बोल दो। दो जो लोग नहीं दिए, अरे कोई बात नहीं, आगे दे देंगे हम। Don't get disappointed, okay? हाँ जी सर जी, बहुत बढ़िया, ये करो। फिगर दिया है सर, दिस इज द फिगर।
एक बार बिफोर यू सी द क्वेश्चन एक बार फिगर माइंड में प्रिंट कर लेना. सो देर आर टू सेक्शंस, वन इज ऑफ 100 एंड अदर इज ऑफ 50 एंड यहाँ पे ये नीचे पूरे नीचे 50 किलो न्यूटन साइड पे 100 है. क्वेश्चन पे आ जाओ सर, कम टू द क्वेश्चन. यार TMM 100 mm 50. Look, you should be very careful. It's not circular cross section. थोड़ा सोचो sir. It's not circular cross section. If you see, the cross section is not circular, sir. It's not circular. It is square cross section, sir. It is square cross section. So iska, yeah, the dimensions of this are 50-50 and the dimensions of this are 100-100. Chalo, karo sir. Try karo. I request you to try. Thank you, Ajay. Thank you. प्लीज सिर्फ लोग थिंक दैट यू आर इन एग्जामिनेशन हॉल. मान लो आप एग्जामिनेशन हॉल में है, यू आर इन एग्जामिनेशन हॉल, बस कुछ नहीं है, सोचो. मुझे बताइए सर, एक काम करते हैं सर. आई डू वन थिंग. लेट अस टेक दिस एज ए, दिस एज बी एंड लेट अस टेक दिस एज सी. इफ यू सी मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बीसी सेक्शन लेते हैं तो कैन यू टेल मी बीसी इज सब्जेक्टेड टू व्हाट लोड सर? बीसी बीसी में तो ये 100 का लोड आएगा ही नहीं सर. ये सर नो सर. अरे देखो, इफ यू सी बीसी, अरे यार यहाँ पे कट, अरे यार इधर देखो, यहाँ कट करके देखना सर. यू कट इट एंड सी. So if you see and if you cut it and see, it is in static equilibrium. If the load applied is 50, the resistance will also be 50. So throughout this, it is subjected to 50. Can you tell me what is the stress developed in this portion? ये इसको A ले लेंगे, इसको B ले लेंगे, इसको C. What is the stress developed in BC portion, sir? Anyone? So it is load is 50, but it is in kilonewton by area. What is the area, sir? इसका area क्या है, sir? It is 50-50. 50-50 square cross section. Square cross section area will be 50 into 50. तो कितना आ रहा है, sir? और कुछ? So लिख सकता हूँ, sir? So लिख सकता हूँ, sir? Yes. So I think it is 20 now. So in this portion, the stress in BC portion is 20. कैन यू टेल मी व्हाट इज द स्ट्रेस इन एबी पोर्शन? ध्यान से सुनो. अगर मैं इसको कट करता हूं, देखिए सर, देखो, दिस लोड इज ट्रांसमिटेड, ये वाला लोड, ये लोड भी ट्रांसमिटेड है. ये कितना है सर? 50. एंड देयर इज 100 एंड 100. तो देयर इज 100 एंड 100. सो व्हाट इज द टोटल लोड सर? टोटल लोड इसमें कितना होगा सर? सो रेजिस्टेंस इज 100. तो कैन आई से इट इज 250 सर? गलत है सर? 250 है ना उसमें? यस. तो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू लोड बाय एरिया. दैट इज लोड इज 250 एंड द एरिया इज, इसका एरिया कितना है सर? 100 into 100. देखो देखो, दिस एरिया इज नॉट सेम. दिस इज 100 into 100. तो कितना होगा सर? 10. देखो, 2 zeros 2 zeros 4. 10 क्यूब ये भी गया. तो दिस इज स्ट्रेस इन ए बी इज 25. पूछा क्या है सर? बिना देख के क्वेश्चन कर रहे हैं हम. क्या बोला है? द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस एनीवेयर, देखो एनीवेयर बोला है, एनीवेयर. इन दिस, इन द लोअर पोर्शन द स्ट्रेस इज 20 and in the upper portion the stress is 25. So what is the maximum stress, sir? Actually ये भी देना था यहाँ पे, ऑप्शन ए में मैं 20 बनाऊंगा सर. तो सडनली स्टूडेंट्स नीचे का देखकर 20 दे सकते. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. आई एम नॉट सेइंग यू आर गोइंग टू गिव. सो दिस इज द राइट आंसर. इज इट ओके सर? गुड स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया. समझ? Shall I continue और दुकान बंद कर दूं? Shall I continue or close the दुकान? Just chips. टॉम बढ़िया करवाऊंगा सर. टॉम. ओके सर?
आई वॉन्ट टू क्लोज द दुकान। नहीं आप लोग ना, यू आर नॉट सीरियस। आपको कुछ फायदा हो रहा है? ठीक है सर जी, ये करो। देखो देखो एक सेकंड, सी द फिगर। एल 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 एम एम, ठीक है, सी द फिगर। यार देखो, यस, आंसर दीजिए सर, मस्त क्वेश्चन है सर, कम ऑन। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। डा 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 डा। Google AI powers campaigns. चलो, let me see how many of you can give the answer. Naveed has given correct answer, I think. Naveed ने सही आंसर दिया। देखो सर, what is the, I told you very clearly, इससे पहले I think before this session I solved a similar question. What the reaction whenever a beam is subjected to concentrated moments, the reactions will be equal to net moment by length. What is the net moment, sir? One is anti-clockwise, other is clockwise. So of same magnitude. So what is the net moment? Net moment is zero. So what are the reactions, sir? जब net moment ही zero है, देखो automatically moment से ही balance हो गया सर वो. Automatically with moments itself it is balanced. So therefore what are the reactions, sir? हमने बताया था आपको, reaction at A and reaction at B will be equal to net moment by length. So what is the net moment, sir? Anyone in the class? इसमें net moment क्या है? शून्य. शून्य, net moment zero है सर. Net moment zero, तो reactions will be zero. जब reactions zero है, तो देखो support reactions are zero, बिल्कुल correct. तो shear force क्या होगा सर? So moment के कारण कोई shear force नहीं है. देखो, so the reactions are zero. यहाँ का reaction यहाँ का zero. So if you draw the shear force diagram, what is the shear force here? Zero, because the reactions are zero. Everywhere zero, 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 zero. So therefore the shear force is zero. So this is also correct, sir. Someone said the bending moment is zero. मेरे प्यारे बच्चों, इस पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट देखो, इसमें तो कुछ नहीं है. इसमें क्या होगा? तो यहां से शुरू होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, सो सम मैग्नीट्यूड एम, एंटी क्लॉकवाइज होगा, फिर सडनली क्लॉकवाइज होगा. सो देयरफॉर इस पोर्शन में देयर इज अ बेंडिंग मोमेंट. इस पोर्शन में एम है, एम 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 एम, अगेन जीरो. तो जीरो हियर, जीरो हियर. देखो, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, सडनली देयर इज अ मूवमेंट. दैट सेम मूवमेंट कंटिन्यूस कंटिन्यूस कंटिन्यूस. ये एंटी क्लॉकवाइज है, दैट इज नलिफाइड विद क्लॉकवाइज. तो इस रीजन में मूवमेंट एम है, इस रीजन में मूवमेंट एम है. सो बेंडिंग मूवमेंट इज जीरो एवरीवेयर बोला है. नो, एट द एंड इट इज जीरो, बट इसमें मूवमेंट है. तो ये गलत है सर, नहीं आ रहा सर समझ में? अरे यार देखो नहीं आ रहा, क्या स्टूडेंट्स है रे?
there is a bending moment. So because of that bending moment, definitely there will be deflection. Moment के कारण deflection होगा, तो इस portion समझ में आ रहा है? So therefore deflection is zero everywhere. What is disturbing me is everywhere. So deflection is not zero because of the moment there is a deflection. ये भी गलत है सर. अच्छा question था. आया सर? AB is the right answer. बोलो गोलो बोलो गोलो. Next question. ये करो वो करो ये करो रे. Come on, I'm waiting for your answers. सर आप लोग इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, मैं अब यूट्यूब पे आऊंगा ही नहीं सर. देयर इज नो पॉइंट इन टीचिंग यू पीपल. सर आप लोग इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, मैं अब यूट्यूब पे आऊंगा ही नहीं. नो पॉइंट. कोई इंटरेस्ट शो नहीं करते बच्चे. Come on, waiting for your answers. I am waiting for your answers. I am waiting for your answers. I am waiting for your answers. मेरे प्यारे सज्जनों. We've got you covered. You don't need to be a tech expert. I am a tech expert. I know. चलो चलो. We'll do this question. 1 minute में एग्जाम में इतना लॉन्ग क्वेश्चन कैसे? बहुत बढ़िया. You can do in 40 seconds provided there is a sufficient practice. ऐसा मत बोलो सर. देखते हैं सर. देखो देखो कुछ फिगर दिया ना. ना बोला है. A circular solid shaft of length 5 meter is fixed at one end and free at the other end. There is a circle. यही तो होता है सर. And the most sad part is students pre-assume something. ये नहीं आएगा, ये आएगा, अपने आप ही डिसाइड कर लेते हैं सर. सडनली अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो देखो सर टोटली पेपर डिफरेंट आया है. क्या है सर? Length is 5 meter. Read the question. A circular shaft of length L is fixed at one end, free at the other end. A torque of 100 kilonewton is applied at the free end. Maybe clockwise, maybe anti-clockwise, doesn't matter. How much torque is applied, sir? कितना torque apply किया? 100 kilo Newton meter. 100 kilo Newton meter is applied different. The shear modulus and polar moment of inertia are given GJ. So देखो, the torsional rigidity is given as GJ 50,000 kilonewton meter square per radian. GJ is given as 50,000 kilonewton meter square. ठीक है. G का यूनिट क्या होता है सर? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और mm square. J is meter per square. Okay, Newton meter square is correct. Yes, yes, yes. Yes. Okay. Correct. The following are reported over the shaft statement. The rotation at rotation angle of twist is 0.01 radian, and the strain energy, the torsional strain energy is 1 kilonewton. Which of the following statements is correct? देखो सर, आराम से देखो, देखते हैं सर. देखो, T by J is equal to G theta by L. So if you want theta, it will be TL by GJ. Correct, sir. What is, and one more thing, units की तरफ ध्यान देना. There is no need to convert in mm or so because all are given in meter. So कोई बात नहीं सर. देखो, what is T, sir? 100 unit. 100 unit, sir. Unit 100 kilo Newton meter. L, what is the length? 5 meter by GJ. What is GJ? 5123 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर. ठीक है सर. देखो एक बार,
किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, सो कहाँ गए रे वो? हाँ ये सही है सर, पर रेडियन इज करेक्ट बिकॉज एंगल रेडियन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिया है। ठीक है, यस यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ जी, देखो एक बार, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, किलो न्यूटन मीटर इंटू मीटर इज, अरे ये 100, क्या हो रहा सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर। टॉर्क कितना दे, 100 किलो न्यूटन मीटर इंटू एल इज मीटर। किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर एक्चुअली पर रेडियन है ये। किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर 50,000 पर रेडियन। किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलो न्यूटन, ये रेडियन ऊपर जाएगा तो कितना होगा सर? थीटा विल बी इक्वल टू 5, टू जीरोस गया, 1/100, 1/100, दिस रेडियन विल सिट एट द टॉप, सो दिस विल बी इक्वल टू कितना आएगा सर? 0.01 रेडियन is the angle of twist, is the twist at the free end. So is that given, sir? 0.01 radian. So statement 1 is absolutely correct. Statement 1 is correct. Statement 1 is correct. Now the strain energy pool hai sir, strain energy. Can you tell me what is the strain energy? Half T into theta is the strain energy due to torsion. So this is given by half T. What is theta, sir? Theta is TL by GJ. So theta is TL by GJ. So that will be equal to T square L by 2GJ. Very good, sir. T square. What is T square? 100 होल स्क्वायर, यूनिट तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा सर, नहीं आया सर, तो इसको लिखेंगे। बहुत बढ़िया सर, किलो न्यूटन मीटर, दो बार लिखो, यस हमारे को डाउट है तो लिखेंगे, क्यों? ये स्क्वायर हो रहा है। ठीक है सर जी। सर आप तो अजब पढ़ा रहे सर, नहीं पढ़ाऊंगा। टी स्क्वायर मतलब टी इंटू टी, टी इज 100 किलो न्यूटन मीटर, another t is 100 kilo newton meter, t square, and the length is 5 meter by 2 gj. What is gj sir? क्या हो गया सर? gj कितना है सर? 50, 1 2 3, करेक्ट है ना सर? इज इट 50? 50, यस, किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर रेडियन। ठीक है सर, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कितना होगा सर? किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन एक मीटर का, एक मीटर का है, सो आंसर विल बी किलो न्यूटन रेडियन। ओके, कितना आ रहा है सर ये? हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज दिस वैल्यू सर? कितना आ रहा है सर? एक दो जीरोस, एक दो जीरोस गया, 5 वंस 5 वंस, तो कितना बचा है सर ये? इज इट 0.5 सर? 0.5, लेकिन वो कितना दिया? 0.5 आ रहा है ना सर? 0.5, 0.5, तो what is this given? 1, 1 is wrong, so statement 1 is correct, statement 2 is wrong। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट सीखने के लिए आए सर, here we have come to learn the subject। ये मत बोलो सर लेंदी क्वेश्चंस आएंगे, so we have done 2 questions here, how to find out strain energy, how to find out the angle of twist। ये मत बोलना कि we have done only we are doing only one question ना, here we have come to learn concepts, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अच्छा, मशीन डिजाइन का चाहिए प्लीज, आपसे एमडी के क्वेश्चन किए थे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था सर, एक बार रिवीजन। अच्छा एमडी का चाहिए, एमडी का चाहिए सर। ये सेशन में मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम किया सर, मैं सोचता हूँ सर एक काम करो सर, जैसे ही सेशन एंड होता है ना, सेशन एंड होने के बाद आपको जो सब्जेक्ट्स चाहिए कमेंट में लिखो, कमेंट में पोस्ट कर देना, आई टेक केयर। ओके, अगर कमेंट में कुछ भी नहीं आ रहा है का मतलब आई विल नॉट टेक, ये करो, ठीक है। Yes, you are right, Sanchita. Absolutely. The other way. ऐसे खाने का ऐसा. Beautiful. You are right. Absolutely. बहुत बढ़िया. Great, great, great. देखो, which are strain energy method? क्या देखो, strain energy U है. तो what is the deflection, sir? Dou U by dou P. ठीक है. So, Castigliano's theorem used to find out the slope and deflection by using strain energy concept. Which one is using strain energy principle? Castigliano's first method, Castigliano's second method. One is used for finding out the slope, other is used for finding out deflection. Is it okay, sir?
ठीक है सर जी। क्या कर रहे रे, फिगर तो चाहिए ना। दिस इज द फिगर गिवन। देखो एक बार देखो, द फिगर इज गिवन सर। मुझे तो एक देखते ही समझ में आया सर, इसमें बाय लुकिंग एट इमीडिएटली स्ट्राइक हुआ। सुनो केयरफुली, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कूलली देखो सर, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, this is the bending moment diagram, and this is the load diagram. So if there is no load in this, will there be bending moment in that? If अगर इस ये तो लोडेड रीजन है मान लो, सो अगर इसमें कोई भी लोड नहीं है, इफ देयर इज नो लोड इन दिस, नो लोड नो लोड नो लोड, तो बेंडिंग मोमेंट जीरो होना चाहिए। मतलब यहाँ पे लोड है, एंड मोर ओवर इट इज वेरिंग लीनियरली। सो बेंडिंग मोमेंट लीनियरली वेरी हो रहा है, मतलब देयर इज पॉइंट लोड। कहां पे पॉइंट लोड है सर? देखो देखो, लीनियरली बढ़ रहा है सर, इसका मतलब यहां पॉइंट लोड है। बिकॉज हल्का सा थोड़ा अंदर आ गए, हल्का सा इधर आ गए, तो डेफिनेटली लीनियरली बढ़ रहा है। सो देयर मस्ट बी पॉइंट लोड हियर। देयर ऐसा मेरा सेंस बोल रहा है सर, देयर मस्ट बी अ पॉइंट लोड हियर। कितना होना चाहिए सर? व्हाट इज द मूवमेंट हियर सर? एक बार मूवमेंट बताओ कितना है सर? 10 है, तो ये 2 है सर। देखो एक बार, ये मान लो लोड P है सर, P इंटू टू, P इंटू टू, P इंटू टू। सो बेंडिंग मोमेंट यहां पे चाहिए P इंटू टू, दिस इज 2 शुड बी इक्वल टू 10। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द लोड सर? व्हाट शुड बी? अरे P नहीं लेंगे सर, F लेंगे, क्योंकि यहाँ पे P भी है ना रे, इस P से कंफ्यूज हो जाते हैं, हम F ले लेंगे सर। F कंफ्यूज हो जाते हैं सर, ठीक है। सो लेट द लोड बी F। तो F into this length into 2 should be equal to whatever the bending moment here, it is 10. So therefore F will be equal to 5. So therefore there has to be a load of, there has to be a load of 5 at point S, at point S. There has to be load of 5 at point S. देखो आंसर कैसे? 5 kilonewton at midpan, no. 10 kilonewton, no. 10 kilonewton midpan, no. 5 kilonewton at S, 100% करेक्ट है सर। ये मस्त क्वेश्चन था सर ये। मजा 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 मजा। मोटू फटाफट। आई वॉन्ट इमीडिएट आंसर टू दिस। आपको वॉट एवर सब्जेक्ट्स का रिविजन चाहिए, प्लीज इन कमेंट बॉक्स, सेशन एंड होते ही आप कमेंट में यू कैन लीव। दुनिया थिन सिलेंडर of length L and thickness T is made of material with model internal pressure. What is the change in length? Okay. Anyone? देखो देखो. The change in length is देखो longitude. देखो if a member is subjected to a thin cylindrical pressure vessel is subjected to internal pressure, the longitudinal stress is this, and this is the circumferential stress. The circumferential stress is given by PD by 2T, and the longitudinal stress is given by PD by 4T. So he is asking lengthwise. So क्या होगा sir? The longitudinal strain is given by sigma L by E minus nu sigma C by E. Am I right, sir? So it is sigma X, sigma Y. So if you want this, it will be sigma X by E minus nu sigma Y by E. ठीक है sir. So what is the meaning of longitudinal strain? Change in length to the original length. Sigma L. What is sigma L? PD by 4T. Sigma L by E. ठीक है sir. Minus nu. Sigma C. What is sigma C? Sigma C PD by 2T into, ओके फाइन। सो अगर आपको चेंज इन लेंथ चाहिए, ये एल को इधर ले लेना। देखो ऐसा करेंगे सर, प्यारे बच्चों, देखो एल इधर ले लेंगे और पी डी बाई टू टी बाहर ले लेंगे, पी डी बाई टू टी। सो इफ आई टेक पी डी बाई टू टी, यहाँ पे हाफ बचेगा। पी डी बाई टू टी, पी डी बाई टू टी लेंगे तो क्या बचेगा सर? न्यू बचेगा, न्यू। सो व्हाट इज द आंसर सर? PDL by 2TE. This is E, sir. Printing mistake है sir. PDL by 2TE half. Yes, A is the right answer ना? Is it correct? Good. ये भी रिवीजन होगा।
थिन शेल्स हो गया, कॉलम्स हो गया, थर्मल स्ट्रेसेस हो गया, बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन, टॉर्शन, ऑल आर कवर्ड. मजा. I was talking about this question, sir. I was talking about this question, sir. We are nearing, sir. Don't worry. दुनिया दुनिया massless beam is fixed at one end and support roller there. A point load P is applied at the midpoint. As shown, the reaction at the very simple, sir. पहले यहाँ पे देखो एक सेकंड. Let us find out the deflection here. ठीक है सर. Because of this, ध्यान से सुनिएगा. Because of this load, it will deflect. Free छोड़ देना सर. मतलब ये निकाल दो. Because of this load, it will deflect. ठीक है. उसके बाद में रिवर्स लोड अप्लाई करना. So that whatever the deflection is coming due to this should be equal to deflection due to this, so that the net deflection is zero here, because there is a support पे reaction zero होता है. Okay, right. So can you calculate the deflection here due to P? मैं बताता हूँ. देखो एक सेकंड. L/2 P. ठीक है सर. देखो, what is the deflection here? बताओ सर. PL cube by 3EI. PL cube by 3A plus slope. यहाँ पे slope क्या होगा? PL square by 2EI into this length, that is L/2. तो ये कितना होगा सर? So I hope you understood, sir. PL cube by 3EI, PL square by 2A into, okay. So PL cube by 2 2s 4 2s 8 3s 24 EI. Correct. Plus PL cube यहाँ पे L square. Okay. 2 square is 4 2s 8 2 16 EI. बहुत बढ़िया. एनी प्रॉब्लम सर? मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम नहीं है. तो क्या होगा सर? एलसीएम कितना होगा? गलत है सर ये? इज इट गलत? कुछ तो बोलो सर. ठीक है. एलसीएम इज 48. तो ये होगा 2 3. This is 40, sorry, 5PL cube by, this is the deflection. Very good. Now you tell me, is it deflecting? No, sir. So let us see. Because of this reaction, यहाँ पे support है ना, proper cantilever. So when you are applying a load, there will be a reaction. That reaction will be in the upward direction. Let it be R. So now because of this, it deflects. What will be the deflection? PL cube, P के plus में L. Total length is L. This total length, there is a support here. So L cube by 3EI. So what is the net deflection here, sir? What will be the net deflection? Due to this and due to this should be 0. So therefore, equate करो sir. दोनों को equate करो. So this should be equal to RL cube by 3EI. So L cube is gone. So R will be equal to 316. So 5P by L cube is gone. L cube is 5P by 316. 5P by 16 is the right answer. I'm expecting this. 5P by 16 is the right answer. I'm expecting this question, sir. सर आपको ये क्लासेस गेट के लिए भी बहुत फायदा होंगे सर. गेट के लिए भी होंगे, नॉट जस्ट इसरो. ये करो. कहाँ? I think how many questions are? अच्छा, उल्टा आएंगे सर. लास्ट इज 44. लास्ट इज 44. हाँ बोलो. दिस इज लेंथ वाइज. देखो लॉन्गिट्यूडनल.
What is the value of sigma 2, sir? Anyone in the class? Lengthwise ये longitudinal stress है, ये longitudinal, तो longitudinal will be PD by 40. This is circumferential. Sigma 1 is circumferential, so it is PD by 2t. Sigma 1 is PD by 2t. बोला है, क्या बोला है? Sigma 1 is PD by 2t, sigma 2 is PD by 4t. Is it correct, sir? Sigma 1 is sigma 2 is lengthwise. Lengthwise है तो ये longitudinal होगा, longitudinal along the length. So PD by 4t. And this is actually ऐसा है, sir, ऐसा है. So this is along the circumference. ये circumferential है, sir. Sigma 1 is circum. PD by 2t, PD by 4t. Correct. This is correct. ये करो. This is a good question, sir. देखो सर, the state of stress at a point in a machine component is given. Epsilon x, देखो epsilon by epsilon zx ये दिया है. Okay, okay, okay. प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ सर. एक सेकंड मैं बताता हूँ. एक सेकंड. प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, मैं बताता हूँ. वेट सर. प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ. I'll tell you. Where is that printing mistake? शायद हुआ. मैं बताता हूँ. Where is that mistake? यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ सर. XX is 2.5, YY is 2. This is ZZ. देखो, this is epsilon XX. This is epsilon YY. And this is epsilon ZZ. All remaining are shear strains. हाँ. Yes, this is correct, sir. अब सही है, sir. Now it is correct. आंसर दीजिए सर. देखो मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखना. ही इज आस्किंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मैं दो चीजें बताया था क्लास में. नॉर्मल स्ट्रेसेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायमेंशंस और नॉर्मल स्ट्रेन्स. shear stresses are responsible for change in shape. जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा है, ध्यान से सुनिएगा सर. The volumetric strain is given by strain in x direction, strain in y direction, strain in z direction. Remaining strains are given. देखो यहाँ पे all these are normal strains. बाकी के देखो xx normal, yy normal, zz normal. देखो xy shear, xyz shear. देखो those shear strains are not responsible for change in dimensions. They are responsible for change in shape. सो ध्यान से सुनो, कंफ्यूज करने के लिए आपको ये सारे डायमेंशन दिया सर. सो इफ यू वांट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इट इज सिंपली एडिशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस. सो देयरफॉर व्हाट इज x डायरेक्शन नॉर्मल स्ट्रेस सर? 2.5. व्हाट इज y डायरेक्शन सर? 2. and what is z direction sir? -1.5. but all there is 10 power -4 sir, into 10 power -4 into 10 power -4 सब में 2.5 into 10 power -4, this into 10 power -4, this into, so I have taken common. So 2.5 minus 1.5 is 1. 1 plus 2 is 3. 3 into 10 power -4 is the volumetric strain. Yes. So ये भी अच्छा क्वेश्चन था सर. I think we missed one question. I don't know. ये वाला मिस हुआ सर. 45th. करो सर. Please do this. Come on, do this.
बहुत सिंपल है सर. अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. देयर इज force F. देखो, because of this force F, what will be the deflection, sir? And see the direction. This will deflect in downward direction. There is a clockwise movement. Because of clockwise movement, also it will deflect in downward direction. So therefore, delta 1 is equal to FL cube by 3EI. Whenever a cantilever beam is subjected to a point load at the free end, the deflection is FL cube by 3EI. Movement के कारण इधर देखो. Anyone, can you tell me, because of the concentrated movement at free end, what is the deflection? अगर आपको, what is m by ei diagram? m by ei ये होगा. ठीक है सर. देखो, bending moment is same everywhere, so the length is L. What is the deflection at the free end? मैं करूंगा सर. So this center of gravity इसका L by 2. So m by ei into L, ठीक है, is the area movement diagram. Area is m by ei is this length, L is this length, into cg कितना है सर? L by 2. So because of the moment, the deflection is ml square by 2 ei. At least you know this. At least you know this. Because of the moment at the free end, the deflection is ml square by 2a. But in the question, m is given as 2fl. तो यहाँ put करो सर. m is given as 2fl. m is given as 2fl into L square by 2 ei. So therefore, a कट गया. So it will be FL cube by ei. This is the deflection due to moment. So this is delta 2. So इसके कारण जो deflection आ रहा है, FL cube by ei. Hope this is correct, sir. FL cube by ei. Yes. So total deflection will be FL cube by 3 ei plus FL cube by ei. तो कितना होगा सर? 3 मल्टीप्लाई करो तो it will be 4 FL cube by 3 ei. Should be correct ना? बहुत बढ़िया. कितने 45 क्वेश्चंस. आज तो रेट, स्ट्राइक रेट जबरदस्त था सर. टुडे स्ट्राइक रेट वाज द बेस्ट. लास्ट क्वेश्चन ये ऑलरेडी कर चुके. लास्ट क्वेश्चन नाउ. मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर दीजिए आप. एक असाइनमेंट दे दो सर. शैल आई गिव यू दिस एज असाइनमेंट? यस सर. ये असाइनमेंट दूंगा. ऑप्शंस आंसर कमेंट्स में दे देना. ओनली वन क्वेश्चन. बताओ. मोर सर्कल ड्रॉ करो, निकाल दो. ठीक है. सो एक क्वेश्चन आपको असाइनमेंट दिया. सो विच वन इज असाइनमेंट? कमेंट में लीव करना. सो इट इज 40 सेकंड यू हैव टू डू इट सर. कैसा लगा सर सेशन? कैसा लगा सर सेशन? देखो, 1.5 hours में वी हैव कवर्ड 26 क्वेश्चंस. सॉरी, 24 क्वेश्चंस. क्या रेट है सर? ये होता है परफेक्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. तो आपको सेशन अच्छा लगा तो कमेंट के फॉर्म में प्लीज प्लीज लीव द कमेंट सो दैट इट मोटिवेट्स अस. तो नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए आप बता दीजिए. आई विल प्लान अकॉर्डिंगली. लेकिन थोड़ा जल्दी कमेंट में लीव करो सो दैट आई विल प्लान. उसके बाद और कुछ था, ये क्वेश्चन का आंसर. ओके, चलो मैं आई एम एंडिंग द सेशन. थैंक यू, थैंक यू. प्लीज अपने कमेंट्स लीव करना. ओके, चलो. आई एम नॉट आस्किंग यू टू लाइक और शेयर, वो सब बोलूंगा ही नहीं. कैसा लगा सेशन ये बोलो. ओके, चलो बाय बाय. आई एम क्लोजिंग द सेशन. चलो बाय बाय. चलो बाय बाय. फिर मिलते हैं सून.